Hey guys, good evening. Welcome to Guidely. This is Aditya. First of all, best of luck to all the candidates going to attend the IBPS PO interview from tomorrow onwards. There are few last minute tips from my side. Point number one, do update the current affairs of today and tomorrow. PM Modi is already there on the visit of 3 nations. Do check it कि कहाँ कहाँ पर मोदी जी जाने वाले हैं. आज ऑलरेडी कहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये जरूर चेक कर लेना. कल सुबह एक बार अगर आप करंट अफेयर्स चेक कर लेते हो कि क्या कल के मेजर हाइलाइट्स हैं या आज रात के हैं, वो बहुत हेल्पफुल होंगे इन द इंटरव्यू टुमारो. सेकेंड थिंग, डोंट अलाउ द इंटरव्यू प्रेशर टू overcome over you. Means this, I told multiple times, those who have attended the interview best, they are aware about it, that interview is a very negative word, right? So we should do only one thing, that we should not think around this interview again and again. We should be convincing ourselves on the day of interview that it's just a meeting. तो ये याद रखना है कि मीटिंग है, लास्ट मोमेंट पर हम अटेंड करने जा रहे हैं पैनल मेंबर्स के साथ. इट्स अ फाइनल डिस्कशन बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये मानकर आपको इंटरव्यू देने जाना है. बी कॉन्फिडेंट. रीजन इज योर नॉलेज हैज बीन ऑलरेडी चेक्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन. अगर आपने मेंस क्लियर किया है, इसका मतलब आपके पास नॉलेज है. इंटरव्यू में दे जस्ट वांट टू चेक दैट आर यू एडेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, आर यू कॉन्फिडेंट टू वर्क ऑन द पोजीशन ऑफ पीओ और नॉट. सो ट्राई टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर ऑन वन डे. मतलब वो थोड़ा सा बचपना है, उसको थोड़ा अंदर रख के और एक ऑफिसर वाली फीलिंग लेकर जाना है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए. थिंक लाइक एन ऑफिसर ऑन दैट डे. और कोई भी क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ द लीग आता है, डोंट गेट सरप्राइज. डोंट फील लाइक इट्स अ बैंकिंग इंटरव्यू मींस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द बैंकिंग अवेयरनेस ओनली. नो, देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच दे विल आस्क फ्रॉम योर education background, from your family background, even by which bus you traveled, by which train you traveled, whatever it is. कितने stairs थे when you come to this particular building. तो ऐसे क्वेश्चन से सरप्राइज मत होना. They want to check that if you get any out of the context point, how you react over it. तो आपका रिएक्शन क्या होता है? Are you able to manage in that situation or not? अगर कोई situation based क्वेश्चन आता है, in that case try to analyze the situation first, then slowly in the step by step provide the solution. Don't directly jump over the conclusion पे directly jump मत करना. One more thing, don't try to say lie to the panel members. अगर आपको answers आते हैं, in that case answer it confidently. Try to use 3-pointer or 5-pointer rule. 3-pointer rule means if you know the answer or detail a little bit, try to complete it in point 1, point 2, point 3. If you know every detail about that particular answer, then only complete in 5 pointers. So 3-pointer, 5-pointer rule use karna. You will be able to know that, okay, at what moment I need to complete my answer. In case you are not aware about any particular question, then try to be very clear that, sorry sir, I am not aware about this particular concept. I think I have missed it. I'll definitely look into this. एक वर्ड में आंसर कंप्लीट मत करो, that sorry sir I don't know और sorry sir I am not aware about. थोड़ा सा डिटेल में उनको कन्विंस करने की कोशिश करो when you don't know a particular thing. अगर आपको पता है, you are not confident that how to justify this particular answer, maybe my answer is right or wrong, in that case you can take permission that sir I am aware about this particular thing. If you will allow me, I definitely can give the answer, sir. I can give the answer, but if you can allow, because I have a little knowledge. तो थोड़ा सा हिंट कर दो कि मुझे थोड़ा नॉलेज है. So in that case, if your answer is wrong also, they will not feel bad. उनको ये नहीं लगेगा that you are trying to make them fool. आप गलत करने की कोशिश, मतलब आप गलत तरीके से आंसर बताने की कोशिश करो, आपको आंसर नहीं पता, then also you are trying for that. उनको ये नहीं लगेगा because you took a little permission. You have given a little information to them. So be clear with the panel member, be confident as much as possible. अपना voice modulation अच्छा रखो on the day of interview, and all the best. Finally from my side, wishes for all of you. I believe that you guys are able to manage the positivity from tomorrow onwards. I'm not telling only tomorrow, from tomorrow onwards, and definitely you guys are going to come up with the success stories in the upcoming days. All the best, guys.